let's see how to create the list. Suppose we have created a list L1. L1 is equal to I have taken 7, 8, 1, 4, 6, 8, 3, so I have taken. This is a list. Now, if I want to print the list, we'll write simply L1. You can see the list has been printed. Now, if you want to create the list, second way to create the list, that is like this. L2 is equal to L2 is equal to, here we will write the list with the function list, okay, and here will we take input enter number, enter anything, okay, enter anything. So let's see, enter anything. I am entering 3, 4, 5, 6. You can see I have entered. Now you see L2 it contain 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the in L1 it is 7, 8, 2, 6, 8, 3. Okay, so here you can see that I have created a two list. This is a list which I have created. This is a list which I have created through the function list. Okay, this I have created by using the function list, and here I have taken input, and here I have written enter anything, and it has converted to the, ठीक है, ये बना दिया अपना, इस तरीके से बना दिया, अपना लिस्ट बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये पहला हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना लिए हैं। हम लोग वी विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। Count len, I am taking L1. Okay, I am taking L1. Let's see. You can see 7 elements are there in the list. Len has returned 7. I have passed on. मैंने यहाँ पर पास किया है L1. You can see it. You can see it. I have passed here L1. ठीक है, यहाँ पर देखो L1 लिखा हुआ है। हम देखेंगे कि L1 में कितने एलिमेंट हैं। You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, we have the 7 elements. So Ellen has returned 7. You can see here. I hope it is clear to you. Next, proceeding to next, we have seen how to create the list. We have seen how to count the number of elements in the list. Then we also have learned how to access the list. Okay, let's access the list. So in order to access the list, we write the name of the list first. सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लिस्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है। लिस्ट का नाम लिखा, अगर मान लो हमको 0 एलिमेंट L1 का 0, so we want to access the 0th element, just mind it here. What I am doing here in this, here what we are doing, I am accessing the 0th element. I am accessing the 0th element of list 1. I hope it is clear. Next, if we move to the next, now again I am writing L1 from 0 to 4. Okay, I am going to access 0 to 4. Now students, what you can see here, it has sliced, it has been sliced. You can see here 7, 8, 2, 4. 7, 8, 2, 4. यहाँ से 7, 8 और 2, 4 को निकाल कर एक नया लिस्ट यहाँ बना दिया गया है. A new list has been framed by the slicing. Okay, I hope it is clear to you. So we have framed a new list. Okay, I hope it is clear to you. Now, yesterday we have also learned how to concatenate the list, right? Concatenate the list. In order to concatenate, now we have the two lists. Okay, we have the two list, that is L1, you can see, and this is L2. Let's concatenate it in the L3. L3 is equal to L1 plus L2, L1 plus L2, and finally let's print L3.
You can see that L3, it is in the concatenated form. Okay, it is in the concatenated. It has been in the concatenated form. I hope it is clear to you and you have understood it. Next, when we move, so we have joined the list. This is also called as concatenating the list. This is also called as concatenating the list. This is also called as joining the list. I hope you must not have any problem. So while slicing, what we have used? We have used start and end. Start index and the start and the end index. Okay. Next to it, we have let's learn let's learn the next topic like that how to make a copy of the list. We have created a list, suppose L1. Okay, see what is the content of the L1. It is 7824683. You can you can see it here. Okay, you can see it here. It is 78263. This is the content of the L1. ठीक है, अब इसको क्या हम कर रहे हैं, इसकी वैल्यूज को कॉपी कर दे रहे हैं. L1 को कॉपी कर दे रहे हैं L5 में. L5 is equal to L1. I have not created anything special in the L5. Now what I have done, I have copied the value of L1 in the L5. Now check the value of the L5. Okay, it is 782 and check the value of L1 also. Okay, I hope both are same. You can see here that we have copied. ये देखो यहाँ पर, इस जगह पर देखो, यहाँ पर ठीक है, इस जगह पर देखोगे तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, L5 is equal to L1 यहाँ पर, ठीक है, L5 is equal to L1, right? Let me write it here so that it could be more comfortable for you. L1 is equal to L5 is equal to L1. So what we have done, we have copied the value, we have copied the element of L1 in the L5. I hope it is clear. So when we have compared it, okay, when I have printed it, you can see that the values in both the list are same because L5 contains the exact copy of L1. So the values are same, right? I hope you would have understood it. This was about the making the copy of the list. Then we have, and we can also make the copy. We can also make the copy of the list by using a copy function. Like we have, देखो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ किए थे लिस्ट बनाने के लिए, एक तो हम लिस्ट ऐसे बनाते थे, ठीक है, एक तो लिस्ट हम ऐसे बना दिए थे, ठीक है, ऐसे बनाए थे. दूसरा लिस्ट हम कैसे बनाए थे, तो L1 is equal to list. तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर we have used the list function. We have used the list function. ठीक है, so in same way you can copy in the same way. You can copy it like this. Similar, you can copy it. L5 is equal to L1. You have copied it in the same way. You can copy it in the something in the other way. Okay, you can write L5 is equal to L1 dot copy. Okay, L1 dot copy. This will also copy the content of L1 into L5. So L5 is already existing. I will take L6. Okay, I will take L6. Okay, let's see here. I will take L6. L6 is equal to L1 dot copy. Okay, L1 dot copy. Right, I have taken. Now you can see L6, L5 and L1. ये तीनों एक होना चाहिए क्योंकि 5 में भी हम A का वैल्यू डाले, 5 में भी क्या डाले हैं, A का वैल्यू डाले, ठीक है, इसलिए L5. So I am printing first L1. You can see it is, next we print L5. You can see again it is the same, and again I print L6. You can see all it is same in the case. Okay, all it is same here. इस जगह पर देखो, यहाँ पर ये सेम आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग कॉपी करना सीख लिया, ठीक है. You can see here all the three are same. Next we move. Next, I hope it is clear to you, and let's learn how to change the value of element. How to change the value of element. ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने लिया L1. L1 के फिफ्थ एलिमेंट का वैल्यू को हम 100 करना चाहते हैं, 1000 करना चाहते हैं. We can do it by like this. ठीक है, by changing the value of फिफ्थ एलिमेंट. इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है,
what we come to the conclusion that we are changing the value of fifth element to 100. We are changing the value of fifth element to 100. This is how. Okay, so let's see it. Let's see it practically. Okay, you can see here, student, that I have got a list that is L1. You can see this is the value of the L1. Okay, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 3. Okay, so 7, you can see it. You can see it. It is 7, 7, 8, 7, 8, and next it is 2, 7, 8, 2, 4, 4, 6, 6, 8 and 3, right? तो सबका इंडेक्स 0 से ये होगा. तो हमें मान लो आई नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट. इसके वैल्यू को हमको ये 4 से इसको हमें क्या कर देना है, 4 से करके इसको हमको कर देना है 44. ठीक है, क्या कर देना है, 4 से 44 इसको कर देना है. ठीक है, आई नीड टू चेंज इट, bring it change from 4 to 44. So what I will do, the name is, it's the name of this list is L1. ठीक है, L1. अब L1 का ये कौन सा एलिमेंट है, तो 0, 1, 2, 3. इट इज द थर्ड एलिमेंट. ठीक है, थर्ड है, तो इसको कितना कर देना है, 44 कर देना है. ऐसे लिख दिया. ठीक है, ऐसे लिख दिया, हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, let's say it practically. Let's say it practically. Let's see it practically. I have written here and now L1 को print करते हैं. ठीक है, देखो 44 हो गया. You can see it is 44. You can see it is 44 here. Okay, I hope it is clear to you. I hope it is clear. Now the use of index. ठीक है, we will see the use of index. अब मान लो suppose you can see this is the list 1. Let's consider the list 1 here. Okay, let's consider the list 1. Okay, so if you have considered the list 1, let's see, it is 7, 8, 2, 4. It is 7, 8, 2, 4, 7, 8, 2, 4 and 6, 8 and 3. Fine. If I want to know the index, the positional value of 6, what I will do, if I want to know the positional value, so what is the name of this? The name of this list is L1. Okay, the name of this list is L1. So what we will write, L1 dot index, L1 dot index, and here I will pass on 6. So it will return the index of the 6. The first occurrence, okay, it will return, what it will do, this will return, find it here, this will return the first occurrence of 6 in list L1. This will return the index of, first occurrence of 6 in L1. मान लो 6 दो बार है, जो पहले जगह पर जो होगा, तो पहला होगा, उसका पोजीशन रिटर्न करेगा. I hope it is clear to you. Let's say it practically. You can see that, just we have got 6, 7, 8, 2, 4, 4. Okay, so now I want to calculate the index. I want to find the index of, okay, I want to find the L1 dot index. Okay, I want to find the index of 44. I want to find the index of 44. You can see it has returned here. You can see here it has been returned 3. You can see here it has returned 3. Means it returned the first index of first occurrence of that very element. Okay, any problem? Now, if you have any problem, you can let me. Let's say now we are going to learn. We have already learned the following method. Okay, here we have already learned the following method. First, we have learned
the list method, list पढ़ लिया, len पढ़ लिया, index पढ़ लिया, ठीक है? We have learned about index, and now we will learn about append. Okay, what is the meaning of append? The meaning of append is to add something. Just now Pragya has asked that why do we create an empty list? So for the different reason we create the empty list. This is all up to you how you will use the empty list. Okay. Further, we will learn how to use append. Append, add the new element at the end. Okay. What is the use of append? Append. It add the element at the end of the list. I hope it is clear to you. It add the element at the end of the list. I hope it is clear to you. And let's see, we will say it practically. Okay, we will say it practically. Now, students, you can see here. You can see pretty well here that we have a list. हमारा एक list है. जब ये हमारा चल रहा है, हमने रखा है L1 और L1 का हमारा वैल्यू है. We have a value of L1 that is 7, 8, 2, 4, 4, 6, 8, 3, 6, 8, 3. ठीक है? Finally, okay. So this is L1. This is L1. Now let's try to append. अंत में अभी 3 पर ये समाप्त हो रहा है. यहाँ पर हम 45 डालने का कोशिश करते हैं. We will use append for this. ठीक है? How you will append? Let's see. Let's see it practically. We will see it practically. Okay. So let's see. L1 dot append. It is 45. Okay. 45. Now print. Now L1. Let's print L1. So student, now you can see here. You can see here that I have used append here. Okay, I have used append. L1 dot append. मैंने कैसे लिखा है यहाँ पर? देखो यहाँ पर L1 मतलब I am going to append the list L1. Append का मतलब उस लिस्ट के अंत में एक एलिमेंट को ऐड करेंगे. तो L1 we are going to append in the L1. We'll write append. Now what we are going to append? We are going to append a 45. So what we have written here. Okay, and we have you press enter. It will append element. It will add the element in the last. Okay, so this is how we can do. Okay, now मान लो एक हमारा सवाल हो सकता है कि L1 को अपेंड करते हुए उसके वैल्यू को हम लिस्ट 7 में कॉपी कर दें. ठीक है, लिस्ट 7 में सो कॉपी कर दें. तो L7 is equal to L1 dot append. L1 dot append 45 डाला, अब 46 डाल देता है. ठीक है, 46. Let's try this statement and see the outcome. Right. So we can see it here. L1 dot append. Now see what is the value of L1. We have seen. तो यहाँ बच्चों L1 में भी उतना ही है और L7 ये भी इतना ही है. ठीक है, let's see. 17 लिखा गया है. L7. Wait 1 minute. Let's see. Suppose I am going to append L1 dot list1 dot append. list1 dot append. मान लो यहाँ पर हम देते हैं 101 और 102. ठीक है, 101 और 102. Listen, you see students what it has given. You see, if it is not visible to you, I will make it visible. Wait 1 minute. I will make it visible. See what it has given. You can see
इसको देखो, एरर सीखना चाहिए, एरर को समझना चाहिए। ठीक है, व्हाट आई हैव डन हियर, यू कैन सी आई हैव ट्राइड टू, आई होप देयर इज विजिबिलिटी प्रॉब्लम। So I have tried to append the two values. You can see what I have used. I have tried to append the two values. दो values देने जा रहा है, तो हमारा error दे रहा है। ठीक है, क्या append take exactly one argument। ठीक है, append takes exactly as one argument। एक से ज्यादा append में हम append का यूज एक से ज्यादा एलिमेंट हम इसमें पास नहीं कर सकते। We cannot pass more than one element and the append using append। So what to do in this case? Okay, what to do in this case? We will make use of extend। ठीक है, L1 dot extend। ठीक है, L1 dot extend and we will write 101 102, right? L1 dot extend। Okay, now we press here again, here it has been given exactly two arguments, extend L1 dot extend, it is again giving the error। ऐसा करते हैं, रुक जाओ, L1 dot extend की wait 1 minute, L1 dot extend I have provided here L2, I have provided here L2, now print L1। ठीक है, now print L1, you can see it has been extended। I think you must have problem, so let me tell you once again। okay, let me tell you once again। मान लो कि अभी हम एक लिस्ट लेते हैं, देख लो ऐसे करके एक लिस्ट ले लेते हैं। इस लिस्ट में हम दे दिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, I have created 1 2 3। wait 1 minute, next I have taken L2 is equal to, I am cutting 4 5 4 5 6, right? 4 5 6। now I want to extend this list। ठीक है, I want to extend L1, so L1 dot extend, L1 dot extend and I will extend it with L2। okay, I will extend it with L2, so what it will return, it will return the value when we will print L2, when we will print L1, when we will print L1, then it will return 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, it will return 4 5 and 6। ठीक है, तो let's see it practically, let's see it practically। while append function add the element to a list, extend can add multiple, extend can add multiple, it can add multiple element from a list supplied as argument। एक्सटेंड में हम जब भी यूज करेंगे, एक्सटेंड में हम जब भी यूज करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, वो लिस्ट का पास करेंगे। ये ध्यान देने का बात है। ठीक है, ध्यान देने का बात है, एक सेकेंड, ध्यान देने का बात है कि यहाँ पर हम क्या पास किए हैं, और दूसरा ध्यान देने का बात है जिसको हम ग्रीन एरो से हम डिनोट कर रहे हैं, दूसरा ध्यान देने का बात है कि हम यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं। तो इस जगह पर हम जो पास कर रहे हैं, हियर वी आर पासिंग एक एलिमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, बट व्हाट वी आर पासिंग हियर, हियर वी आर पासिंग अ लिस्ट और लिस्ट। ओके, दोनों में, एक्सटेंड में हम क्या देते हैं, एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अपेंड में क्या है, एक एलिमेंट, कैरेक्टर दे सकते हैं, इंटीजर दे सकते हैं, मगर एक्सटेंड में हम क्या देंगे, लिस्ट ही देंगे। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सेप्ट द प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप कहने का मतलब एक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल ये नहीं लेगा, इसको चाहिए लिस्ट। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। व्हाइल अपेंड फंक्शन ऐड, append add at the end a value, single value, the extend it expand the list, it add the value, it add the multiple value taken from the list। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू वो ऐड कर सकता है, मगर वो लिस्ट से लेकर ही ऐड करेगा। वो प्रिमिटिव वैल्यू, प्रिमिटिव कहने का मतलब पुराना डेटा टाइप, पुराना डेटा टाइप मतलब जो तुम क्लास 10 में भी पढ़े होगे, जब एक्सेल पढ़ाए होंगे उसमें भी पढ़े होगे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, प्रिमिटिव डेटा टाइप ये नहीं लेगा एक्सटेंड, इसको चाहिए नया डेटा टाइप, लिस्ट का डेटा टाइप देगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू।
Now, next to it, let's I hope I have shown you it practically, so no need to go it again. And 1 minute. अभी हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़े, इसमें एक नया जो फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें एक नया फंक्शन है हमारा अपेंड पढ़ लिया, ठीक है, अपेंड और एक्सटेंड, ठीक है, अपेंड एक्सटेंड एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड. अपेंड, it append the value, it append the element at the last of the list, single element primitive data type. एक्सटेंड क्या करेगा, ये जो है लिस्ट को मतलब मल्टीपल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, मल्टीपल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट विल बी अपेंडेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट. नाउ वी हैव, अब तो भाई दोनों अंत में ही डाल रहा है, कोई एक डाल रहा है, एक जो है मल्टीपल वैल्यू डाल रहा है, तो हमको मान लो बीच में डालना है, चौथा पोजीशन पे डालना है, तीसरा पोजीशन पे डालना है, इसके लिए हमारा क्या फंक्शन है, इंसर्ट. अब जाहिर सी बात है, व्हेन यू आर एडिंग एट द पोजीशन you need to pass the position, इंडेक्स और वैल्यू, वो चीज यहाँ पर देना होगा, ठीक है, इंडेक्स और वैल्यू. लेट सपोज आई वांट टू L1, L1 के फिफ्थ पोजीशन पर हमें ऐड करना है, ठीक है, L1 के फिफ्थ पोजीशन पर हमें 100 ऐड करना है. वी विल यूज लाइक दिस, ठीक है. तो जब किसी पोजीशन पर ऐड कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोजीशन हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसको हम लोग रन करा के इसको देख लेते हैं, ठीक है. लेट्स से इट and I have given, you can see, print the value of the L1. You can see here the student less than 1 minute is there. I have given the command here fifth position and you can see this fifth position, it is 100. I hope you have understood it. ठीक है, समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत